रहने को सिर्फ आउटवर्ड जो दिखता है वो बॉडी फिट दिखने वाली तक ही मानते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन सैनिटेशन से उसका कितना डायरेक्ट रिलेशन है, ये अवेयरनेस कैसे आएगी? आई थिंक सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. लाइक यू सेड, the clean toilets can lead to a better, your better health. Absolutely. And cleanliness is next to godliness. Our very own dear Mahatma Gandhi says this. And I think that this couldn't be truer because it's just so important to prevent diseases. It's very important to have clean. And in my line of work, I travel so much that it's just very scary to walk into a place and not be sure whether I can use the restroom, you know. And this is not just in certain areas of our country, but majority. आपने कभी ऐसा फेस किया, ऐसा प्रॉब्लम? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, जहाँ पे I wanted to control myself because I did not want to use the bathroom, you know. So ऐसी चीज़ें तो बहुत हुई हैं, and like doctor said that it begins with awareness. It's very important, and I'm so happy that Network 18 is conducting this and is associated with this because this is really the need of the hour, need of the day, and so important to all of us. तो ये जो अवेयरनेस की जैसे आपने बात की और काजल भी कह रही हैं, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करें? क्लीन टॉयलेट्स अवेलेबल हों, एक्सेसिबल हों. जब मैं स्कूल में जो आपने अवेयरनेस का बोला था, तो ये पॉइंट में हमेशा लड़कियों के दिमाग में जो स्कूल में हम अवेयरनेस करते हैं कि अगर आप अपने लिए साफ टॉयलेट चाहते हो तो पीछे मुड़ के देखो कि आपने दूसरों के लिए कैसा छोड़ा है. तो जब तक इस पॉइंट को आप दिमाग में नहीं रखोगे तो आपको भी नहीं मिलने वाला. वो बिहेवियरल चेंज की जो बात कर रहे हैं. बिल्कुल. So to me, most important thing is basically the toilet etiquettes. You have curriculums on science, maths, literature, art, philosophy, and everything. We have all grown up in India, and if you see a curriculum on right toileting, this is a big miss. I agree. Ranging, it's not just having a clean toilet. Understanding from the science point of view, a toilet is not clean जो कि visibly आपको clean दिखता है. हो सकता है कि उसमें still germs हो. Keeping it more cleaner, using the right kind of material to keep it clean. Second thing is if you have the dustbins in the loo, so making sure the menstrual pads and other things are actually put there nicely. Third thing is also you go to the boys schools, you go to the girls schools, are the toilets safe? How safe the toilets are? That's also a very big question which needs. By safe, exactly what do you mean? Yeah, safer toilets for boys and girls mean there's a proper distance between the toilets, especially the urinals for the boys, and are the walls big enough, high enough for the girls, and is there a proper ventilation? Children are growing up, they need to be educated on these subjects too. और vocabulary तो है ही नहीं कहीं पे भी, तो वो vocabulary build करना भी ज़रूरी है, toilet etiquettes build करना भी ज़रूरी है. First thing is asking the questions, asking the right questions solve your 90% of the things. Correct. तो वो questions rightly पूछना ज़रूरी है. इसीलिए ये जो मिशन स्वच्छता और पानी जो हम नेटवर्क 18 के साथ में कर रहे हैं, I believe डॉक्टर साहब आपकी आवाज़, कजल आपकी आवाज़, youth will be actually engaged in this. They will be taking the pledges. Conversation start तो हो कम से कम कहीं ना कहीं. So with our programs alone, we reached to around 24 million school kids across India. We have started it recently, and you will be hearing soon about the kind of work what we are putting together with the Sesame Street, with Raya, Chunky, and the Muppets, and we are bringing the Muppets at the center to communicate with the kids on the behavior changes what needs to be there. It's very difficult to change the norms. And norms in urban, in the rural, in the tribal, and the peri-urban are very different. But what is important and interesting is we can change the behaviors. And we are seeing a rapid shift in the knowledge, attitude, behavior, and practice. So if the right knowledge is there, it will translate into changing into the practice. You'll find more cleaner boys in the girls' toilet. You will find, boys and girls appreciating the value of the cleaner toilets. They'll be able to make the link clearer between their hygiene, health, and sanitation. You're a mother. वो कहते हैं बच्चों को बता के कुछ नहीं किया जा सकता. Monkey see, monkey do. हाँ, so you have to show it and then they do it. ये कैसे समझाएंगे आप अगर आपको अपने बच्चों को समझाना हो?
after being a mum, I was always very careful about hygiene. It's always been of prime importance to me. But after having a baby of my own, I just make sure that the grounds are clean, there's less contamination, objects. Not just visibly clean. No, not just visibly clean, even otherwise, very clean. Using products which can help us keep our homes clean. Whichever strata of society you belong to, it does not really matter what means are available to you, but you can keep your surroundings clean and hygienic. And when it comes to my home and my child, I just hope that my child picks it up and learns from the examples around him. स्टार्ट ऑफ सोसाइटी की आपने बात की और आप जिस स्टार्टअप में काम कर रही हैं वहाँ पर कैसे ये डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, क्योंकि उनके पिछली जनरेशन ने वो उस तरह से जिया नहीं है अपने आप को, तो वो बच्चे कैसे सीख रहे हैं? सर जैसे ही सर ने बोला ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 पॉइंट हैं जो मैं भी हमेशा फॉलो करती हूँ। चेंज इन एटीट्यूड की पहले इस पॉजिटिविटी के साथ आए कि जो हम बात कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो नेगेटिव कि हम इस पे बात ही क्यों करें, वो गंदा साफ लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं, तो उस पॉजिटिविटी को लेकर आना। सेकेंड, नॉलेज से एम्पावर करना, फिर चेंज इन प्रैक्टिसेस, वो करें प्रैक्टिसेस को चेंज। तो जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, लोगों को वोकैबुलरी भी नहीं पता, तो हम उनको एक हेल्दी हैबिट्स देते हैं। जैसे हम पहली बार उनको एक 5P पाउच देते हैं, एक छोटा सा पाउच हम अपनी तरफ से देते हैं, विच कैरीज एक पैड, एक पैंटी, क्लीन पैड, एंड उसके बाद एक पेपर, रफ पेपर, एक पेपर बैग और एक पेपर सोप। तो हम उनको बोलते हैं कि अब आपको पीरियड्स आएंगे तो आपको घर नहीं जाना है, आपको सीधे टॉयलेट जाना है और आराम से पाउच लेके जाइए। आपकी पैंटी स्टेन हो गई है, आप पैंटी चेंज कीजिए, अपने पेपर बैग में रख के घर ले जाइए, वहाँ जाके वॉश कर लीजिए। आपको पैड चेंज करना है तो आप अपना पैड पेपर में रैप करिए, डस्टबिन में डालिए, नया पैड लगा लीजिए और बाद में अपने हैंड वॉश या पेपर सोप ड्राई रख के आप उसको। तो ये छोटा सा 5 आइटम्स देने से हम उनको एक हेल्दी हैबिट्स डालते हैं। अब वो भूलेंगे नहीं, एक बार उन्होंने वो यूज़ कर लिया ना, तो उनको हमेशा याद रहेगा कि इसको रिफ़िल करना है, कि अपने काम नहीं आया फ्रेंड के काम आया। तो ये छोटी सी हैबिट ना पहले धीरे से डालते हैं उनके अंदर और उनको रियलाइज़ कराते हैं कि इस छोटी सी हैबिट्स आपकी लाइफ में कितने बड़े चेंजेस हो रहे हैं। तो इससे हमारी अटेंडेंस वाला जो सर ने बोला ना, सिक डेज को हम काफ़ी हद तक कम कर पा रहे हैं। और जो काजल ने बात की, एज अ चाइल्ड शी सेड कि एज अ चाइल्ड इज अभी क्रॉलिंग एज में है, जो अंडर 5 किड्स के लिए एक बहुत बड़ा इशू इस कंट्री में डायरिया का है जी। उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? आपके इनिशिएटिव्स कैसे हेल्प कर रहे हैं? Thank you so much for asking me this question. And I really want to thank government of Uttar Pradesh, Pathak ji and Anandi Ben Patel madam. I went to them and I spoke to them about India's situation and Uttar Pradesh's situation on the under 5 diarrhea management. Both were very kind and they consented to launch the program with us. It's called the Diarrhea Net Zero program. The aim of the program is to save 100,000 kids' life. If you see worldwide, there are 3 countries which have the highest number of diarrhea cases. One is a neighboring country, Pakistan.